question. First of all, read the question carefully. A balloon starts from rest from the ground with acceleration 5 meter per second square. After 2 seconds, a particle is dropped. So after 2 seconds, we have dropped a particle from the balloon. Now they are asking find the time taken by the particle to hit the ground. So draw the ground like this. Okay. Balloon will be like this. Okay. Initially it is here. After some time, balloon will be here. Clear? Let us suppose time t is equal to 0, balloon is at ground. This is ground. Here, after 2 seconds, here t will be 2 seconds. Let us suppose it travel a distance h. And its velocity at after 2 seconds will be v. Clear? Understood? Yes. Now, once a particle is dropped, if a particle is dropped at this height, now concept is that if a particle is dropped from body, then it is having the same velocity as that a body. Okay, if you drop a particle, this particle is having the same velocity. This is a particle, it is also moving with the same velocity. It will go and it will come down like this. So they're asking how much time the particle will take to hit the ground. Okay, this is the particle. Question understood? Yes. So particle velocity is same as that of balloon after 2 seconds. Because at 2 seconds we have dropped a balloon. Clear बेटा? Yes. आ गया. तो इस v को निकाल लीजिए. कितना आएगा v? v कितना आएगा बताओ कैसे निकालेंगे? v is equal to balloon start from rest है ना? Yes. तो v is equal to u plus at. एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू t 2. तो वेलोसिटी कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड. क्लियर? अब आपको एस भी निकाल सकते, कितना एच निकाल सकते. एच कितना होगा वैसे? बैलून का लगा लो, इसको इनिशियल मान लो, इसको फाइनल. तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं आप फॉर्मूला. क्लियर? सो Yes, यू sir. विल बी 0 बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? इट इज गिवन 5. Fine. Okay, for balloon, and time is 2 seconds. Okay, then h will Yes. be 10 meter. Okay, Yes, sir. now see what they are asking, how much time balloon will take from. Just see, you can for balloon you can take this is initial and this is final. Okay, Yes. understood? You know we supply equation of motion for balloon. Third equation of motion for balloon I'm writing here for balloon. Okay, you need to solve. I will write for balloon. This is initial, this is final. So you have taken initial there. You can take x or y here only. Okay, like this. सर हम लोग थर्ड इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं? थर्ड नहीं बेटा, आप लगा सकते हो, आपको टाइम निकालना है ना शायद. यस है सर. सेकंड लगा लीजिए और क्या है, सेकंड से काम चल जाएगा. ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर. ठीक है, अब बैलून को आपने क्या करा से, बैलून से जो पार्टिकल छोड़ा है उसके बाद वेलोसिटी वही होगी, लेकिन ये बैलून अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी. ये तभी तो इसकी वेलोसिटी एक टाइम के बाद 0 हो जाएगी ना ऊपर जाते समय, फिर पार्टिकल नीचे आएगा. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? माइनस एच. और यू कितना होगा? v इंटू टी प्लस हाफ. एक्सीलरेशन कितना होगा? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. ठीक है,
समझ आ गया? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, माइनस एच बी टी माइनस 5t²। ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। एच आपने निकाल ही लिया, 10 मीटर है, तो कितना आएगा, -10। ओके, बी की वैल्यू आपने निकाली 10t माइनस 5t²। सो 5t² माइनस 10t minus 10 is equal to 0. Alright. So from this quadratic equation, if you solve, if you take 5 common, then it will be t² minus 2t. Minus 2 will be 0. Apply quadratic formula, minus b plus minus square root b² minus 4ac. Okay, upon 2a. So t will be 2 plus minus 8 plus 4, that is 12. So t will be 1 plus minus 2, 3 second. Okay. So correct answer is time cannot be negative, it will be positive. This is the answer. Please write. Understood? Clear? Okay, thank you.